So till last class, we have done how to start MS Paint. हम MS Paint कैसे start कर सकते हैं, हम drawing area किसे कहते हैं, तो हमने ये last class तक किया था. So आज हम next important part of MS Paint पढ़ेंगे, that is toolbox. Now स्टूडेंट्स, व्हाट इज टूल बॉक्स? हम टूल बॉक्स किसे कहते हैं और सबसे पहले हम टूल किसे कहते हैं? व्हाट इज टूल? सो अ टूल इज समथिंग, अ टूल यू कैन से विच हेल्प अस टू डू सम वर्क. टूल हम किसे कहते हैं? टूल हम उस चीजों को कहते हैं जो हमें कोई काम करने में मदद करते हो, राइट? सो व्हाट इज द टूल ऑफ अ टेलर? एक टेलर का टूल क्या होता है? उसकी थ्रेड्स, उसकी स्विंग मशीन्स, राइट? सो टूल क्या है? टूल वो चीज है जो हमें कोई काम करने में हेल्प करता हो. नाउ इन MS Paint, what is the toolbox? So and where it is located? So let's read. A toolbox is located on the top of the paint window. So what is the location of toolbox? The location of the toolbox is at the top. कहाँ पे? पेंट विंडो के टॉप में टूल बॉक्स रहता है. इट हैज मेनी टूल्स, उसमें बहुत सारे टूल्स है. वी यूज दीज टूल्स टू ड्रॉ एंड कलर. हम इस टूल्स का इस्तेमाल, इस टूल्स का यूज क्यों करते हैं? ताकि हम ड्रॉ कर सके और अपने ड्राइंग में कलर भर सके. ओके, सी देयर इज अ पिक्चर गिवन टू यू विच इज शोइंग अस द टूल बॉक्स. जो आपके बुक में जो पिक्चर दिया गया है वो हमें टूल बॉक्स का पिक्चर है. क्या क्या है टूल बॉक्स में? टूल बॉक्स में there are 6 tools which we get while we paint. What are they? They are pencil, they are eraser, it is filled with color, then the next is color picker, then we have text and magnifier. Now let us read one by one that how these tools help us in MS Paint. First is pencil tool. Now the word pencil itself say that pencil tool is similarly like pencil. जो पेंसिल हम घर में यूज करते हैं, तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको पेंसिल चाहिए ताकि आप अच्छे से ड्रॉ कर सको. सो द पेंसिल टूल works like a pencil only. It is used to make freehand drawings. To draw pictures, start with the pointer to the drawing area. So, pencil tool, it works like a pencil. Like we draw and we write with the pencil, with the help of the pencil in notebook. So, in painting area, in drawing area in MS Paint, we use pencil to draw freehand drawings. Now, what are freehand drawings? Which you draw very freely with your hands, like hills, mountains, rivers, streams, house, birds. You work with pencil very freely. So in MS Paint, to start the picture, to start the drawing, we first click the pointer in the drawing area. Then we press the left mouse button. We press the left mouse button and we drag the mouse to the right. Okay, last step, we do the same step. We press the left button of the mouse and we make a circle, or we can make any pictures, any diagrams by dragging the mouse from left to right or to the direction where you want to draw. Next comes the next part of the toolbox is fill with color. So the words fill with color itself say that what is the work of this tool.
It helps us to fill our drawing with the color. But one thing we have to keep it in our mind when we use this tool. What is that? Let us read. If the shape you want to fill has any breaks in its borders, then fill color spreads to the rest of the drawing area. To find and close any openings, click the View menu, point to zoom, and then click Zoom in or Zoom out. The Fill with Color tool is used to fill selected colors in the picture. So what thing we need to know while we use fill with color, हमें क्या चीज ध्यान में रखना है कि जब हम कोई ड्राइंग करते हैं और ड्रॉ करते समय अगर कोई लाइन हम नहीं जोड़ते हैं ठीक से, लाइक वी आर ड्राइंग हिल, वाइल ड्राइंग द हिल, अगर हम कहीं पे एक लूप होल मतलब कहीं पे हम ज्वाइन करना लाइन को भूल जाते हैं और उसके बाद अगर हम फिल विथ कलर ऑप्शन का यूज करते हैं तो जो भी कलर हम चूज करेंगे वो पूरे स्क्रीन पूरे पेज में स्प्रेड हो जाएगा। अगर कहीं पर भी ब्रेक रहता है, अगर हम कहीं पर भी बॉर्डर्स को अच्छे से नहीं जोड़ते हैं तो जो भी कलर हम करेंगे वो पूरे शीट में स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कहाँ पे ब्रेक रह गया है इसे खोजने के लिए हमें क्या करना होगा? तो कहाँ पे ब्रेक रह गया है उसे खोजने के लिए हमें क्या करना होगा? उसे खोजने के लिए हम व्यू मेन्यू में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम जूम ऑप्शन खोजेंगे और जूम में क्लिक करेंगे तो उसमें क्लिक करने से हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, एक है जूम इन और जूम आउट। नाउ व्हाट इज जूम इन एंड जूम आउट? जूम इन का मतलब होता है जब हम पिक्चर को जूम करके उसे अच्छे से देखते हैं। ठीक है, इन मतलब पिक्चर को बढ़ाना, उसको जूम करना। जूम आउट मीन्स जब हम उस पिक्चर को कम कर देते हैं। लाइक I have a mouse right now. If I scroll my mouse like this, if I use the scroll wheel like this, so see my page is zooming. So this is zoom in. जब हम पेज को बड़ा कर रहे हैं, that is zoom in. And if I want to decrease the size of the page, that is zoom out. See, the page is getting zoomed out. Okay. Now, why we use fill with color tool? We use this tool to fill the selected color in the picture. जो भी हमें कलर पसंद है उसे फील करने के लिए हम fill with color ऑप्शन का यूज करते हैं। Now comes the text tool. Now, what is the text tool? The name itself says text हमें बताता है, नाम हमें बताता है कि अगर हम कोई वर्ड लिखना चाहते हैं या अगर हम कुछ चीज पेंट में MS पेंट में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कौन सा ऑप्शन यूज करना होगा? उसके लिए हमें द टेक्स्ट टूल का यूज करना होगा। नाउ हाउ टू यूज द टेक्स्ट टूल? द फर्स्ट स्टेप इज क्लिक द टेक्स्ट टूल इन द टूल बॉक्स। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें टेक्स्ट टूल को क्लिक करना है जो कि टूल बॉक्स में दिया गया है। उसकी पहचान क्या है? पहचान है वो उसमें एक बड़ा ए, कैपिटल हैंड ए लिखा हुआ रहेगा। Now what is text? Text is letters, words or numbers. Okay. Second step. After you click the text tool to create a text, it creates a text frame. Now what is frame? You have seen photo frame. फोटो फ्रेम का वर्क क्या होता है? फोटो फ्रेम का वर्क होता है कि वो उस फोटो को उसी चार कोनों में रखेगा। ठीक है, फोटो फ्रेम इज मे बी इट ऑफ सर्कल और मे बी इट इज ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल, तो वो जो फ्रेम है उसके अंदर ही फोटो स्टिक रहेगा। सेम व्हाट इज द टेक्स्ट फ्रेम? टेक्स्ट फ्रेम वो चार कोनों वाला फ्रेम है जहां पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो। So create a text frame by dragging the mouse pointer diagonally and then click the font size and style you want.
तो हमें पहले क्या करना है, पहले टेक्स्ट टूल में क्लिक करना है, उसके बाद हमें टेक्स्ट फ्रेम क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए हम माउस को डायगोनली मतलब ऊपर से नीचे खींचेंगे, ठीक है, और वी कैन से लेफ्ट टू राइट। उसके बाद जो भी हमें फॉन्ट चाहिए या फॉन्ट साइज स्टाइल चाहिए या साइज चाहिए वो हम क्लिक करेंगे। Now there is an assignment. This assignment we'll do at last. I'll show you at the last. Okay. Click. What is the assignment? Click inside the text frame and then type your name. Move and enlarge the text frame and place it in the middle of your picture. To change the color of the text, click a color in the color box to insert the text on the colored background. Click the new background box option below the toolbox and then click a color with the right mouse button to change the background color. Okay, this is the assignment. This I'll show you at the last. Third step is to insert the text into the picture. Click outside the text frame. जब आपने सब टाइप कर लिया, टाइप करने के बाद आपको उस टेक्स्ट को MS पेंट में पिक्चर के ऊपर लाना है, तो उस बॉक्स से निकलकर कहीं पर भी क्लिक कर, स्क्रीन में कहीं पर भी क्लिक करने से वो बॉक्स, वो लिखा हुआ आपके पिक्चर के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। Now there are some points which we need to remember while we use text tool. What are the notes? First, you can only paste text when the text tool is selected. आप सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हो, मतलब आप सिर्फ वर्ड्स लिख सकते हो या आप सिर्फ वर्ड्स पेस्ट कर सकते हो जब हम टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करते हैं। You cannot paste any graphics when the text tool is selected. हम कोई भी पिक्चर उसमें पेस्ट नहीं कर सकते जब हम टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करते हैं। Second, you can enter text into a picture only in normal view. हम कोई भी टेक्स्ट जब हम उसे इंटर करते हैं पिक्चर में, हम उसे नॉर्मल व्यू में ही इंसर्ट कर सकते हैं। थर्ड, द टेक्स्ट टूल बार कैन बी ड्रैग्ड एनीवेयर इन द विंडो। जो फ्रेम आता है टेक्स्ट बॉक्स का, हम पूरे विंडोज में कहीं पर भी उसे ड्रैग कर सकते हैं, उसके प्लेस को चेंज कर सकते हैं। Now the next come eraser tool. Now what is the eraser tool? It works like a normal eraser which we use while we write. The eraser tool is used to erase just like a pencil eraser. This tool is used to erase a part of drawing. जब भी like example, जब आप लिखते हो, लिखते टाइम अगर आप गलती कर देते हो तो आप इरेजर से उसे इरेज कर देते हो, आप मिटा देते हो। तो जब भी हम MS पेंट में कहीं पे गलती करते हैं तो वी यूज इरेजर टूल एंड वी इरेज इट। नेक्स्ट कम द कलर पिकर. The color picker tool is used to sample and match any color in your picture. Color picker tool, आप कोई भी कलर को चूज कर सकते हो और उसे उसका एक सैंपल टेस्टिंग कर सकते हो कि वो कलर कैसे दिखेगा। स्पेशली हम ये तब यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे कलर्स रहते हैं। There are many colors. Here is the example given. Suppose we are working with the color blue. हम ब्लू कलर के साथ काम कर रहे हैं, तो there are different colors. We have sky blue, we have light blue, we have dark blue, we have navy blue. So there are different type of shades of blue colors. So उस टाइम हमें कौन सा कलर यूज करना चाहिए, कौन सा अच्छा लगेगा, उसके लिए हम कलर पिकर टूल we can use the color picker tool and we can pick any blue color, and as soon as we select the blue color, the pencil turns to a filler with the blue color. Suppose हमने light blue color यूज किया है, जैसे ही हम कलर पिकर टूल में यूज करेंगे, जैसे हम कलर पिकर टूल में क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लाइट ब्लू कलर में क्लिक करेंगे, जो पेंसिल है वो ब्लू कलर से भर जाएगी एंड देन वी कैन
check whether this color is working, this color is good or not. Next comes the magnifier. We all have seen the magnifying glass. So what is the work of magnifying glass? It helps us to see the things more closer. So the magnifier tool can be clicked over an area on which you want a closer view. जिसे आपको एकदम करीब से देखना हो, उस पार्ट में हम क्लिक कर सकते हैं. Right click, zoom out. So much less clunky than in previous version of Paint. So left click करने से हम closer view देख सकते हैं. When we give a left click of the mouse in the picture, तो हम उस पिक्चर का एक क्लोजर व्यू देख सकते हैं, और जैसे ही हम राइट क्लिक करते हैं तो वो जूम आउट हो जाता है. This has made the MS Paint this version more easier and more clean to use. Then comes color palette. Now what is color palette? Like when you buy the wax color, that is when you buy Faber Castell, that oil pastel colors, so you have different type of colors, so that is arranged in a manner. So color palette is a place where it contains many colors. Okay, we can choose any colors for our drawing. Last is how to close the paint. If you have completed your work, अगर आपका work complete हो गया है and you want to close the paint, just we need to click on the close button. And how the close button looks like? It looks like a red box with a small white cross. Okay. So on the completion of this chapter, what we have learned? We have learned that paint is a drawing tool. What is a paint? Paint is a drawing tool where we can draw, where we can make simple and detailed drawings. Second, toolbox is located on the top of the paint window. Third, the color picker tool is used to sample and match any color in your picture. Third, the magnifier tool can be clicked over an area of which you want a closer view. Fifth and last, that is paint has many drawing tools and colors. Okay. So students, now we are going to do the assignment. So in your assignment, it was told that how to use the text tool. Okay. So we are going to see how to use the text tool. See, where is the text tool? See here, this is the toolbox. See, here is the toolbox, right? This is the toolbox. And here, can you see this A is written? So this is the text tool. Okay, so now we are going to use this text tool. So first I'll select this text tool. I've selected the text tool. Now see, this mouse has turned to this I. Now I'll draw a text frame. I'm dragging my mouse diagonally. See, this was the I here. I am dragging my mouse diagonally, that is left to right with up to down, and I've created a text frame. Okay, now I can select any font. It is in Californian FB. So let us select any font style. So I will select, let's say, Cambodia, and any font size I can select. It is in 48, so let it be in 48. Okay, now I am going to type here. What I am going to type? I am going to type computer. Okay, wait, let me change the color. First I need to change the color, that is I'll do it in black or anything else. I can do it in red also. Let's do it in red. Okay, so I'm going to type
computer class standard 1. Okay, we are doing drawing in paint. Okay, so I have typed this. Now I want to change the background color. I want to, okay. See, I have clicked. So see, as I have clicked in other places, a text has come here. जैसे ही मैंने दूसरी जगह में क्लिक किया तो टेक्स्ट यहाँ पे आ गया. तो like this we can use the text tool while we paint. Okay.